Hello student, I am your maths faculty. Today we start we continue the chapter number 6 in previous lecture. Okay, we show the some angles, right? Line and angles. The chapter is a line and angles, right? So here the chapter number 6. Chapter number 6. Okay. ओके सो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लाइंस और थोड़े बहुत एंगल्स के लिए पढ़ लिया था. आगे आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स. ओके, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, okay, so what is about the complementary angles, students? Right, there is a complementary angle. So simple, like two angles, two angle, the sum of whose measure measures is how much? 90 degree are called complementary angles. Complementary angles, right? It's very easy. Complementary angles, that means the two angles, the sum of whose measure is 90, याद रखना, is total 90, so are called the complementary angles each other. Okay, so for example, you just see this. Okay, first of that, okay, first, okay, complementary angles. So first, okay, and similarly second, okay. So here this one and this one. Okay, another here angles, is simply right. Okay, so they all are the vertex. Therefore, first of that angle is a B A C, right, and this one is मान लो D, right, it is a D, right. So it's very simple. Here the angle B A D and angle DAC, okay, are the complementary angles, right, are complementary angles, right. Okay,
So suppose this measure is a x degree, right, and this measure is a y degree. So both are complementary, so that's why the x plus y is equal to how much? 19, because this is the complementary angles. Chalo, understand this? Clear? Okay. So now the another angles. Okay, just we check this. Now is a supplementary angles. Is a okay is a okay supplementary angles, right? So supplementary angles here, the simple two angles, okay, two angles, the sum of whose measure, the sum of this whose measures is 180 are called supplementary angles. Supplementary angles, right? Okay, so it's very simple. The supplementary angles, that means the sum of two angles is 180, is called the supplementary. Okay, so here supplementary angle, that means the first. Okay, we draw the figure and explain. Okay, now okay, this angle D vertex, okay, this one is A, this one is B and C, right? Okay, so मान लो this angle is a x degree, okay, this angle is a y degree, right? Now so therefore angle BAC and angle CAD या DAC are supplementary angles. Okay, so simple, x plus y is equal to how much? 180. Understand? Okay, so this is the supplementary angles. Now another angles is a angle bisector. Okay, is a angle bisector. So angle bisector or ray AX is said, okay, is said simple, is said to be normally is said to be the bisector of, it's said to be a bisector of angle BAC, right? BAC because we here draw if
x is a point in x is a point in the interior of the angle. Okay, interior of the angle BAC. Okay, interior angle of the BAC पर. ओके, तो इट इज कॉल्ड द बाइसेक्टर. एक एक्स इज इंटीरियर होना चाहिए एंड एंगल BAX. ओके, एंड एंगल CAX ओके आर इक्वल. ओके, BAX एंड XAC. ओके, अब हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरे वर्टेक्स के साथ हम लोग लिख सकते हैं. राइट, सो हियर U इक्वल टू जस्ट. राइट, ओके, चलो ड्रॉ द फिगर एंड एक्सप्लेन दिस इज वेरी इजीली. तो फर्स्ट ऑफ दैट हियर first we draw the any angles. Okay, and okay, right, so this is the B A C. This one is X. Right, तो देखो x is the interior of the BAC and these two angles are equal, then AX is called the bisector. AX is called the bisector of the angle BAC. Understand? So here AX, so therefore angle BAX is equal to angle XAC is equal to CAX, half of the angle BAC. Understand? This is an important result, okay, for our sides. So angle bisector. Understand this? Okay, so the BAC and XAC is equal to half into BAC. Okay, this one is angle bisector. Okay, now another pair is adjacent angle. Adjacent angles. Okay, adjacent angles. So adjacent angles, first of that, so very easy. Adjacent angle, that means two angles. Okay, two angles are called, say to be, are called the adjacent angle. Angles. If 3 points, you remember 3 points. First point is they have a same vertex.
they have the same vertex. Second, they have the common arms. They have the common arm. And okay, and third one, uncommon arms are uh, on either side of the common arm, right? So just we check the figure and you explain this very easily, you understanding very easily. First of that, मान लो कि two adjacent angles are there, तो first of the angles हम लोग complete कर देते. ओके, चलो हो गया. Second, now this B, A and C, this one is D, right? So देखो here these two angles are angle BAD and angle CAD या DAC, दोनों लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम्स. BAD और CAD या BAD एंड DAC, ओके, कोई भी लिख सकते हो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं. DAC, ओके, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज, तो DAC. चलो क्लियर. आर द एडजेसेंट एंगल्स because they have the common arms, okay, AD, and another two uncommon arms are either side of the, देखो एक इस साइड पे एक इस साइड पे, तो either side of the common arm. चलो क्लियर. तो सेम वर्टेक्स कौन है? A. दोनों सब जो एंगल्स बन रहे हो वो वर्टेक्स A पे बन रहा है. चलो क्लियर. दिस इज द एडजेसेंट एंगल्स, ओके. एंड now last pair of this for here linear. Okay, the first is linear pair of angles. Linear pair of angles. Okay, so here two angles, two adjacent angles. Two adjacent angle are said to form a linear pair. Okay, linear pair of angles, right? If okay, it's simple. Linear pair, form a linear pair. Okay, if there only a non-common arms. Okay, non-common arms are two opposite rays, right? Two opposite rays, for example, right? Okay, so just we mark this.
चलो हम लोग इसको थोड़ा फिगर ड्रॉ करके समझ लेते हैं ताकि हमारा जो है वो पोर्शन इजीली हो जाए। ओके, यहाँ पे हमें ऐसा बताया गया है कि एडजेसेंट एंगल है, राइट। These two adjacent angles, right? Okay, तो मान लो this one is O A B, okay, and this one is C, right? So simple. Here angle AOC and angle COB, okay, are linear pair of angles. Understand? Linear pair of angles. चलो clear? So they all our definition is completed. Okay, तो पहले supplementary बच्चों the pair of two angles, okay, is called sum is 180 is called the supplementary, sum of two angles is 90 is called the complementary, and then after the linear pair of angles, so compulsory two adjacent angles, okay, is 180, then it is called the linear pair of angles. Okay, तो इसी बेस हम लोग इसी की एक थियरी देख लेते हैं। थियरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर्स। ओके, तो वो भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट, राइट हियर द ओके थियरम नंबर 1 क्या है? थियरम नंबर 1 नॉर्मली, राइट। तो चलो चेक कर लेते हैं थियरम नंबर 1 के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओके, इफ अ रे, okay, if a ray stands, if a ray stands on a line, जो स्टेटमेंट है on a line, okay, then the sum of sum of the adjacent angles so formed is 180। ओके बच्चों, इसका दूसरा फॉर्म क्या है? आप कह सकते हो कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर टू लीनियर पेयर, ओके, दे आर सप्लीमेंट्री। ओके, अगर कोई भी एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर है तो 180 है। उसका कन्वर्जन क्या है कि अगर द टू एडजेसेंट एंगल्स इज मेजर इज 180 देन आर लीनियर पेयर। एक कन्वर्जन थियरम है, थियरम 1 एंड थियरम नंबर 2। ओके, आपको ऐसे ही इसको आगे जाने देना है। अंडरस्टैंड? चलो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? गिवन, तो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है? ओके, पहले वो हम डिसाइड करेंगे, राइट। चलो गिवन, तो हमारे पास जो बच्चों जो गिवन है वो अल्टीमेटली क्या दिया है यहाँ पे। तो अब कोई एक रे आपको बताना है, तो मान लो कि अ रे सी डी ले लेते हैं। क्या ले लेते? अ रे सी डी विच स्टैंड, ओके, विच स्टैंड्स, फिगर के हिसाब से मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूं। तो विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी सच दैट
so that two angles are made. Okay, so that angle ACD and angle BCD are formed. राइट, तो चलो सबसे पहले जो नीड है वो कंप्लीट कर देते हैं. हमें पहले क्या बताना पड़ेगा, एक लाइन. तो यहाँ पे बता देते हैं एक लाइन. ये लाइन हमने बता दी. चलो इसके बाद यहाँ पे CD स्टैंड्स. ओके, CD AB. चलो जो बोला था वो हमने यहाँ पे कर दिया. तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, क्या कुछ नया किया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. तो सबसे पहले तो यहाँ की बात है टू प्रूव. तो हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं, तो दो एडजेसेंट एंगल बने ना, वो सप्लीमेंट्री है. राइट, तो एंगल CAD प्लस एंगल CAB या BAD. ओके, CDA. मुझे चेंज करना पड़ेगा, CDA. I read this the whole. राइट, ओके. चलो सबसे पहले फिगर देखो, यहाँ पे CDA राइट, प्लस दूसरा कौन सा एंगल दिख रहा है बच्चों, CAB. राइट, एडजेसेंट एंगल है इसीलिए. तो ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए. ऐसा हमें प्रूव करना है, मान लो. चलो अब आगे देखते हैं. कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं. यस, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो हमें और एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है. राइट, विच इज ये रही परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन बन गई. राइट, ओके. चलो इंडिकेशन भी कर देते, यानी बात खत्म हो. तो ये आपका आया DE. राइट, क्या है बच्चों, DE. तो क्या आपने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे, तो ड्रो रे DE. ओके, which is perpendicular. Okay, ray. So here normally CE. मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज, कोई नहीं, DE. हमने क्या है, ड्रॉ DE. So which is DE is perpendicular to AB. Right. चलो, तो फर्स्ट is finishing that. तो प्रूफ. नाउ प्रूफ कहाँ से हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे, अब काम आसान हो गया हमारा. तो लेट्स सी दैट प्रूफ. तो फर्स्ट ये दोनों कैसा एंगल है, एडजेसेंट. सो फर्स्ट ऑफ दैट, चलो फिगर के हिसाब से दो एडजेसेंट एंगल से पहले वो बता दो. तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कौन है. ओके, तो सबसे पहले एंगल ADC प्लस एंगल CDB. यहाँ पे हमने लिखा था CAB. राइट, तो पहले तो CDA और CAB नहीं, CDBR. ओके, तो सबसे पहले तो उसको ए वाला और इरेज करना पड़ेगा बच्चों, यानी कंफ्यूजन ना हो. ओके, चलो सबसे पहले ये वाला खत्म कर देते. तो इस CD है, CDB. राइट, क्योंकि D पे बन रहा है ना, इसीलिए. ओके, तो चलो अब अपना काम शुरू हो जाएगा यहाँ पे.
तो सी डी बी इज इक्वल टू 180 बिकॉज ओके आप जानते हो ये क्या है, लीनियर पैर। ओके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। उसके बाद एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी बी माइनस एंगल ई डी सी। ओके मुझे इतना पोर्शन चाहिए, मान लो ये वाला मैंने आपको बताया, तो किस में से माइनस हो जाता है यहाँ पे, इज वेरी सिंपल। ओके हमारे टोटल में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे इतने पोर्शन को टोटल में से, तो ये मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो। नाउ एडिंग 1 and 2, तो हम लोग 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखो। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमें खाली जो लिखना है ना उसके ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले ये वाला ए सी डी, सबसे पहले मैंने 180 अभी नहीं लिखेंगे, तो इसको एक मिनट बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो प्रूव करना है ना, इसीलिए। चलो तो 1 में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ दैट मैंने रब कर दिया, मुझे चाहिए था ए सी एंगल, सबसे पहले ए सी डी, ध्यान रखना। तो ए सी डी जो है वो इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, ओके, एन प्लस एंगल ई डी सी, राइट। अब ऐड कर रहे हैं तो एंगल ए डी सी बच्चों प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू, एक तरफ है और एक तरफ है, तो आपके पास क्या है, एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई डी सी, ओके। देन आफ्टर प्लस एंगल ई डी, ये रफ कर देते हैं, ठीक नहीं आया, ओके। तो एंगल ई डी बी, क्या आया, ई डी बी प्लस एंगल ई डी सी, हाँ ई डी बी माइनस ई डी सी, ध्यान से देख लो, ओके। ये वाला जो है वो प्लस नहीं, ये क्या आया बच्चों, माइनस, क्या आ गया, माइनस, ए वाला, ओके। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई, क्या, तो देखो ए वाला कैंसल, ए वाला कैंसल, ओके। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई डी बी, राइट, ई डी बी। चेक करो फिर से, ओके। तो ए क्या आया, सबसे पहले ए डी ई, ओके, 90 डिग्री है, फिर ई डी बी भी क्या है, 90 डिग्री है, इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट, इज इक्वल टू 180, ओके। सो हेंस द प्रूफ। सो देयरफॉर एंगल ए सी, सॉरी ए डी सी के फिगर के हिसाब से जाना पड़ेगा, ओके। सो ए डी सी प्लस एंगल सी बी डी, ओके। तो मैंने यहाँ पे देखो सी डी ए लिखा है ऊपर एंड डी बी सी, तो डी बी सी यहाँ पे डी सी डी बी, ओके, अगेन सी, ये रहा ना, अगेन सी डी ए सी डी बी, तो सी डी बी is equal to 180, right? So you got the result.
Okay, so very important for these chapters. Okay, the first theorems is completed, right? So similarly, you copy that and also the same theorems है उसका theorem number 2 conversion of this तो आप प्रूव कर सकते हो, बराबर है. अंडरस्टैंड दिस. ओके, आई थिंक ओके आज आप इस इतना समझने में आपको इंटरेस्ट लगा होगा. इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 6 and 2 theorems more. Okay, thank you for watching video and please subscribe the channel. Okay, understand this so you get the more videos. Okay, one by one. Thank you children. Okay, until then and bye bye.